हाय एवरीवन। आजकल बहुत से लोग मोटिवेशन पे बात करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ इट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स नीड्स और मोटिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड एंड मोटिवेशन। द सेकेंड पॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू। The third point is the life of eagle. The fourth point is Abraham Maslow pyramid of needs. And the fifth point is ways to reach to your full potential. What is motivation? It's a process in which an individual got the direction, intensity, persistence and efforts to reach and get the goal. For example, एन आर्मी ऑफिसर। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं। नंबर 1 है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राइज, यानी कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किस हद तक काम करते हैं। और नंबर 2 है डायरेक्शन। अगर आपने एक गोल सेट कर लिया है कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है या डॉक्टर बनना है या इसके अलावा मैंने म्यूजिशियन बनना है या किसी भी चीज़ को आपने अचीव करना है, तो उसके लिए आप किस तरफ जाते हैं, कौन सी डायरेक्शन आप चूज़ करते हैं, क्या आप उसके ऑपोजिट करते हैं या उससे रिलेटेड करते हैं। और सबसे तीसरी और बहुत ही अहम चीज़ वो है परसिस्टेंस। हाउ लॉन्ग अ पर्सन ट्राइज। क्या आप एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करके अगर आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है तो आप उसको छोड़ देते हैं, या मुसलसल आप डटे रहते हैं कि मैं ये काम करके ही छोड़ूंगा। नीड्स आर समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, फॉर अ लिविंग बीइंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। दैट इज रियली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वांट्स। डेफिशिएंसी कॉजेज अ क्लियर एडवर्स आउटकम, अ डिसफंक्शन और डेथ। So there are 2 types. First is objective, that is physical, and for example food, shelter, etc. And the second is subjective, that is psychological. For example self-esteem, affection and etc. So now I'm going to explain it to you what is the difference between objective and subjective. ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सबके लिए सेम है। हर किसी को फूड की ज़रूरत है, हर किसी को शेल्टर की ज़रूरत है। और जबकि सब्जेक्टिव की जब बात की जाती है तो वो हर एक की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत इन अ सेंस कि किसी के लिए वो कम भी उसमें वो मैनेज कर लेता है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और इसकी एग्ज़ाम्पल हम जो है वो इस चीज़ से भी ले सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि कुछ लोगों की जो एम्स है वो बहुत हाई होते हैं और कुछ के बहुत एवरेज पे होते हैं, यानी कि वो चीज़ों को इतने ज़्यादा सीरियस या इतना हाई लेवल पे नहीं लेके जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबडी एंड सब्जेक्टिव इज़ देयर इज़ अ वेरिएशन। द कनेक्शन बिटवीन मोटिवेशन एंड नीड्स आर द डिज़ायर टू फुलफिल अ नीड, and for this you have to struggle and strive for it. We know everyone, all the living beings are motivated due to their needs. और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और उसके अलावा आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं they are motivated due to their need of living and more than living, motivated because of their food. So here I am going to give you an example of the eagle. Don't be a parrot in life. A parrot talks way too much, but can't fly high. But an eagle is silent and has the willpower to touch the sky. Here's the 7 mentalities that we can learn from an eagle. Number 1, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down.
Eagles fly with eagles. There's a saying that goes like this: people you hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. Number 2, eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Meaning, have a vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed. Number 3, eagles are fearless. An eagle will never surrender to the size or strength of its prey. It will always give a fight to win its prey or regain its territory, meaning no matter what the size or big your problems are, don't give up. Instead, face it. Successful people are fearless. They face problems head on. Number 4, eagles are tenacious. Eagles love storm. When clouds gather, the eagles get excited. The eagles use the storm wind to lift themselves higher. Once it finds the wind of the storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle the opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree, meaning achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish in them and use them for profitability. Number 5, eagles never eat dead things. Eagles never eat dead meat. In other words, an eagle does not scavenge. It only eats the meat from the prey it kills itself. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for new frontiers to conquer. Leave your past where it belongs, in the past. Number 6, eagles prepare for training. They remove the feather in the soft grass in the nest so that the young ones get uncomfortable in preparation for flying. And eventually, they fly when it becomes too unbearable to stay in the nest. Meaning, leave your comfort zone. There is no growth there. Last but not least, number 7, eagles possess vitality. When the eagle grows old, his feathers become weak and cannot take him as fast and as high as it should. This makes him weak and could make him die, so he retires to a place far away in the mountains. And while there, he plucks out the weak feathers in his body and breaks his beak and his claws against the rocks until he is completely bare. A very bloody and painful process. Then he stays in his hiding place until he has grown new feathers, new beaks and claws, and then comes out flying higher than ever before. Meaning, we occasionally need to shed off old habits, no matter how difficult. Things that burden us or add no value to our lives should be let go of. Thanks for watching this video. Motivation and needs give energy to your behavior. For example, rewards, encouragement, opportunity, challenge, goal, and so on you can see in this picture. These are the things which really motivates you and which helps you to achieve your goal. अभी हमने ईगल की बहुत ही आला एक स्टोरी देखी और उसमें देखा है जो कि बिल्कुल एक रियलिटी बेस्ड है और बिल्कुल ऐसे ही होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ह्यूमन नीड्स एंड फॉर द ह्यूमन नीड्स वी आर जस्ट गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द theory of Abraham Maslow. Abraham Maslow proposed a hierarchy of needs that outlines the relationship between human needs and motivation.
इनकी हायरार्की में 5 चीज़ें हैं: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Let's have a look over it. The first is the physiological needs. These are the most basic needs for survival, such as water, shelter, sleep, food, and so on. So when these needs are not met, these become the primary motivators of behavior. The second is the safety needs. So once the physiological needs are satisfied, they are met, they are fulfilled, individuals seek safety and security. And what is safety and security? For example, personal and financial security, health and well-being. The third is love and belonging needs. After achieving safety, social needs become important. People seek relationships, friendship, intimacy and family, and that become the core of their life. Number 4 is esteem needs. These involve the desire for respect, appreciation and recognition from others. For example, like and value yourself as a person, self-confidence, achievement, recognize your strengths. Now we are going to see why self-esteem is so important. So here are different points that your academic or your professional success, for example, completing your degree and starting your job or business, and then influence on relationship, your trust, respect, honesty, and resilience and coping skills, that you are believing in yourself that you can do it, and then impact on your mental health. Overall, it really has a great impact, and that impact comes in a way like coping with different situations. Now we are going to discuss about the 5th point, which is self-actualization. This is the most important one, and this is the top of the hierarchy of the need for self-actualization, which is the desire to realize one's full potential. Why there is need to realize one's full potential? Because if all the needs are fulfilled and you are not able to put your full potential in something which you desire, you want to do, your life will not be happy. It will be very empty. So in this, you have to engage in different creative activities. It can be any field, because all the fields are very creative, and in this you are going to see your personal growth, and you are going to meet the peak experiences of your life, which are really going to give the fulfillment of your life. Okay, so the people who are self-actualized, what they got the truth. They are seeking for justice, wisdom, meaning in their life and so on. सेल्फ एक्चुअलाइजिंग लोग जो हैं वो खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि वो जैसे हैं बिल्कुल ठीक हैं. अगर किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली अबाउट देयर पोटेंशियल, एंड दे वर्क फॉर इट. एंड उनमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि उनमें कमियां हैं, खामियां हैं, बल्कि वो दूसरों की कमियों और खामियों को भी देख के इग्नोर करते हैं, उनको भी एक्सेप्ट करते हैं. और इसके अलावा दे आर नॉट थ्रेटन्ड बाय अदर्स स्ट्रेंथ. अगर कोई इंसान बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर चुका है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस चीज़ से डर जाएंगे, बल्कि वो ये कंसीडर करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और मैं किस चीज़ पे अपना जो है वो बेस्ट कर सकता हूँ और बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इसके अलावा जो अगर हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों के बारे में, तो अगर वो अकेले भी हैं तो दे आर नॉट लोनली. अक्सर ये होता है, बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत से एक ग्रुप में बैठे होते हैं, बट स्टिल दे आर अलोन. बट दे आर सर्टेन पीपल who are alone but they are not lonely, because they know about their ambitions, about their dreams, about their goals. And जो self actualizing लोग हैं, they are independent, they are not depending on others, and they are moving towards their goals. And the most important thing is they appreciate others. बहुत ये कम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो दूसरों को अप्रिशिएट करें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें
और उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट भी करें। और इनमें ये चीज़ बहुत एक आला किस्म की चीज़ पाई जाती है, और इसके अलावा ये दूसरों के साथ बहुत ही लविंग, एक्सेप्टिंग और स्पॉन्टेनियस होते हैं। दे वट एवर दे आर शोइंग, they are basically, they are themselves. They are not putting another person, or they are not faking, and they are always motivated. And because of them, there are so many other people who get the motivation. So I suppose, and I really wish all those who are listening to this video कि आप भी सेल्फ मोटिवेटेड बने, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बने। यू गॉट दिस पोटेंशियल, यू गॉट दिस एनर्जी, यू गॉट दिस नीड ऑल्सो। एंड बहुत से लोग आपकी इस मोटिवेशन से, आपकी इस इन तमाम क्वालिटीज़ से ना सिर्फ खुद इंस्पायर्ड हो सकते, बट दे बिकम वेरी गुड, यू कैन से दैट दे बिकम अ गुड एग्जाम्पल टू अदर्स एज वेल. And thank you so much, and keep growing, and please like, subscribe to my channel. And the last thing which I want to say, if you got any question related to this content, and if you want to ask me anything, you are always welcome. You can just comment in the comment box, and I'll be really happy for it. See you in the next video.